Hello kids, welcome to my channel Education Wheel. So children, today I will teach you a new chapter of class 1 from English NCERT book, unit 4, and the name of the chapter is Once I Saw a Little Bird. I hope you all like this poem and enjoy it. So here is our poem, Once I Saw a Little Bird, unit 4. Sing and enjoy this poem. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew. Read this poem again. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say how do you do, but he shook his tail and away he flew. Here is some new words of this poem. Bird, hop, stop, tail and window. Okay, and now come to the summary of this poem. So in this poem, a boy see a little bird sitting in his room window. He comes near to the bird to talk him, but the bird rapidly flew away. Okay. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? तो वो जो बच्चा है वो क्या कह रहा है बर्ड से, एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया को फुदक फुदक कर आते हुए देखा और वो आकर कहाँ बैठ गई, मेरे कमरे की खिड़की पे बैठ गई। बट जैसे ही मैं चिल्लाया उस छोटी चिड़िया को, तो क्या तुम रुकोगी, ऐसे करके उसने उससे पूछा। पर उसके बाद क्या हुआ, I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew. बट जैसे ही मैं खिड़की के पास उसका हालचाल पूछने जा रहा था, किंतु तभी उसने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और उड़ गई। ठीक है, तो ये थी हमारी इस पोएम का हिंदी मीनिंग एंड हमारी ये पोएम यहीं पे एंड होती है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज पार्ट एंड वर्ड मीनिंग करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।